Now let us start with the next point from our digital electronics lecture series, that is De Morgan's theorem. Now again, it is a part of Boolean algebra, minimization of the given expression, where another set of useful rule that we can use is called as De Morgan's theorem. Now let us start with the first one, as the first law of De Morgan's theorem. If you see mathematically, it is written as a plus b whole bar is equal to a bar into b bar. Now what it says, this law states that the complement of sum of variable is equal to product of individual complements. Okay, so whenever I am having addition of variable, and if I take its whole complement, it can be written as product of individual complement. अब इसको जस्टिफाई किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो जो भी ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट हम इंडिविजुअल वेरिएबल को देंगे. सो इफ आई गिव दिस कॉम्प्लीमेंट टू ए, आई कैन राइट दिस एज ए बार. प्लस का कॉम्प्लीमेंट होता है मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट, और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी बार. सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम. अब इसको हम प्रूव भी करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे द मेथड ऑफ ट्रूथ टेबल्स. In that case, I will take the first term as, so let's go for the truth table, as the first variable is a, then it is b. What we need, a plus b whole bar. So I will be taking the complements of a bar and b bar, and finally I will be taking a plus b whole bar. So this is about its input side, and this is our output side, which is a plus b whole bar. Along with that, we'll take RHS, which is product of individual complement a bar into b bar. Now we all know that we have two inputs a b, so the combinations same 1 1. Now let us take the a bar, that is complement of a. It could be 1 1 0 0, or b bar का जाएगा 1 0 1 or 0. So let's go for the first term as a plus b whole complement. So we have to add this one, or we can go for this one. So 0 plus 0 complement will be 1. Next 0 plus 1 will be 1. 1 का complement 0. Third 1 plus 0 1, उसका complement है 0. And finally 1 plus 1 will be 1, complement will be 0. So this is about a plus b whole bar. Fine. Now we'll go for the RHS term. RHS term is a bar into b bar. So we'll be getting product of these terms. So start with the first one. 1 into 1 will get 1. 1 into 0 0. 0 into 1 0. 0 into 0 0. So if you see a plus b bar और a plus b whole bar is equal to a bar into b bar, यानी कि ट्रूथ टेबल जो है वो वेरीफाई हो चुका है. सो दिस इज कॉल्ड एज first theorem of De Morgan's theorem. Now we'll go for its second theorem also. Now this is the second theorem, as a b whole bar, that is a into b whole bar is equal to a bar plus b bar. Now again इसको अगर रियलाइज करना है तो सिंपली ये कॉम्प्लीमेंट हम दोनों वेरिएबल को दे सकते हैं. सो इफ आई गिव दिस कॉम्प्लीमेंट टू द फर्स्ट वेरिएबल, वी विल बी राइटिंग दिस एज ए बार. अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये हो जाएगा प्लस, और b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा b बार, दैट इज a बार प्लस b बार. स्टेटमेंट अगेन, दिस लॉ स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स is equal to sum of their individual complement. So complement of product of their variables is equal to addition of or sum of individual complements. यानी सिंपल सा स्टेटमेंट है. Let us prove this one. For that case, again we'll take AB, a bar, b bar, and we'll take now ab whole bar, and here we'll write a bar plus b bar. Let's define them 0 0 0 1 1 0 and 1 1. We'll go for it. Complement 1 1 0 0 1 0 1 and 0. Now we'll go for the last step, that is a into b whole bar. So let us start with this combination. यहाँ पर 0 0 है, 0 into 0 0. 0's complement will be 1. In this case 0 into 1 0, उसका complement आ जाएगा 1. Next 1 into 0, it will be
0, 0 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 एंड फाइनली 1 into 1 विल बी 1, कॉम्प्लीमेंट विल बी 0. तो ये आ जाएगा ए बी का होल पार्ट. विल गो फॉर दिस टर्म्स ए बार प्लस बी बार. अब यहाँ पर हमें ये टर्म्स ऐड करना पड़ेगा. 1 plus 1 will get 1, this combination 1 plus 0 1, this combination 0 plus 1 1, 0 plus 0 0. So a b whole complement becomes equals to a bar plus b bar. So this is the second law of Demorgans theorem. जनरली डीमॉर्गन्स थ्योरम हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए. अगर कोई एक्सप्रेशन में मल्टीपल टाइम्स कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं. Now we'll see few examples on Demorgans theorem. That is how to minimize the given expression using Demorgans theorem. So we are having this question: reduce the given expression using Demorgans theorem. Okay. So सबसे पहले तो ये जो upper line है, this is complement, will provide to each and every variable. So if I provide this to this first variable, I will be writing this as a b bar whole bar. Now this plus becomes multiplication. I will assign for this a bar bar plus multiplication will getting a b bar. This will be our step. अब देखिए यहाँ पर कुछ जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं. दिस कॉम्प्लीमेंट विल गेट कैंसल, दिस कॉम्प्लीमेंट विल गेट कैंसल. सो विल बी लेफ्ट विथ ए बी मल्टीप्लाइड विथ ए इंटू, अब इसको दिस इज गिवन एज AB whole bar. So we'll write this as again AB whole bar as it is. Now we'll apply a rule. Rule is what? A into A. A into A will be A. So we'll get this term as A into B multiplied with AB whole bar. So this is as good as X into X bar. So the result is going to be 0. So F will be equal to 0. अब ये कैसे आ चुका देखिए. इफ़ आई कंसिडर ए बी एज एक्स तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक्स बार. फाइन. सो अगर यहाँ पर हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो वी कैन राइट एक्स इंटू एक्स बार. सो इट इज़ एक्स बार इज गोइंग टू बी 0. सो द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन विल बी एफ इज इक्वल टू 0. Now let us take another example on reduction using Demorgans theorem. We have that expression f is equals to a plus b c bar a b plus a c bar का होल पावर. सबसे पहले ये कॉम्प्लीमेंट जो है हम इसको डिवाइड करेंगे. सो विल राइट a into b plus c bar into, now we'll assign this complement to every variable. We'll getting this term as a b whole bar, ये प्लस का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में ए सी बार होल बार. सो यू असाइन दैट टर्म. अभी असाइन होने के बाद विल अगेन सिंप्लीफाई दिस टर्म पी प्लस सी बार इन द फर्स्ट ब्रैकेट विल अप्लाई दिस वन. नाउ ए बी होल बार, ये कॉम्प्लीमेंट हम दोनों को वेरिएबल को दे सकते हैं. सो आई कैन राइट ए बार प्लस बी बार इनटू, नाउ दिस अगेन ए बार plus c complement will get cancelled, will get c only. Fine. Now next step, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे. ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट ए बार से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट ए बार इंटू ए बार प्लस ए बार इंटू सी प्लस, अब बी बार से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट ए बार बी बार plus b bar into c. Okay. Now let us apply certain rules of Boolean algebra. सबसे पहला रूल a bar into a bar. We all know that when I multiply the same variable, we'll get the same result. A bar into a bar will be a bar. So we'll put those values. A into b plus c bar into a bar plus a bar c प्लस ए बार बी बार प्लस बी बार इंटू सी. दिस इज दैट टर्म. अब कुछ कॉमन निकलता है क्या देखेंगे. देखिए यहाँ पर ए बार ए बार ए बार, यानी कि दिस थ्री प्रोडक्ट टर्म से हम ए बार को कॉमन निकल सकते हैं. आई विल बी राइटिंग, आई एम टेकिंग ए बार एज कॉमन. वी विल बी लेफ्ट विथ
1 plus c plus b bar plus b bar into c. Now that rule will be applied. 1 plus anything, 1 के साथ किसी को भी ऐड करेंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा. I am writing 1 plus c plus b bar is equal to 1. So we'll take this expression as a into b plus c bar into, now this term a bar into 1 will be a bar plus b bar c. हो गया. अब c bar से मल्टीप्लाई करेंगे, a into b plus this term a bar c bar plus b bar c into c bar. Now again rule and law, c into c bar. C into c bar will be 0. We'll be left with a into b plus a bar into c bar. Yeah, so what we got, a into b plus a bar into c bar. Finally हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. I'm writing this term as ab plus a into a bar into c bar. देखिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ से आते हैं ab plus a bar into c bar. Again the rule, a into a bar, a into a bar will be 0. So we are left with f is equal to ab plus this term 0 into c bar. 0 c bar 0 हो जाएगा. So we'll get f is equals to a into b. So this is going to be our reduced expression. आप देख सकते हैं अगर ये इक्वेशन को हमें इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग लॉजिक डायग्राम और लॉजिक गेट, so we need at least we can calculate as 7 to 8 gates to implement this equation. But if I reduce this, I will be requiring only one AND gate. So this is the beauty of using laws of Boolean algebra, Demorgans theorem, AND law, OR law, or any other law. But the only disadvantage of using Demorgans theorem or we can call it as laws of Boolean algebra is the length of simplifying the expression. It's quite इसका जो लेंथ है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारा लॉज भी यूज़ करना पड़ता है. अगर ये 3 वेरिएबल का है तो इतना एक्सप्रेशन बढ़ गया. इफ़ यू इमेजिन इट कुड बी 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल, सो इट द लेंथ विल बी मोर एज वेल एज कॉम्प्लेक्सिटी विल बी हाई. एंड टू ओवरकम दिस इशू वी विल बी स्विचिंग टू द नेक्स्ट टेक्निक एज kmap, जिसको हम कॉल कर सकते हैं कर्नॉफ मैप ऑल्सो. थैंक यू.